Hello and very good morning, my dear students. How are you today? Today, my topic is electric potentials, and today we will revise this chapter, which is part of Unit Test 1 syllabus. Yesterday, we have completed the Gauss theorem. As you know, that Gauss theorem and electric potentials is the syllabus of Unit Test 1. So there is total 30 questions will come of all of objective based, and uh, yesterday we have completed the Gauss theorem chapter. Today my topic is electric potentials. So let's start this chapter. So electric potentials mean that electrostatic potential energy stored in a charge is called as its electric potentials. So first is part that conservative nature of electrostatic force, independence. So but these are the few topics which will not come in objective based questions. As you know that work is done to move the charge from one place to another in a field. So this is not part of your syllabus. Your topic is actually start from this one part, and this one topic is your topic start from this. The concept of electrostatic potential difference and potentials from line integral of electric field. As you know that there is a as you know there is positive charge, and if there small charge is placed from at point P, and you want to move the charge from point P to charge Q, there is small displacement. Okay, for the small displacement you have here the electric potential is VA and VB. Total potential कितना आएगा बेटे? Let the charges is move from A to B तक हमने इसको move करवाना है, ठीक है? तो the charges potentials at A is known as electric potential VA and the potential at B is called VB. Okay, and whenever this is the total length from A to B is L. तो अगर हमने यहाँ के इन बिटवीन स्मॉल पोर्शन ले लिया P एंड Q, उसकी लेंथ स्मॉल लेंथ है DL, तो अगर हम मूव करवाएंगे देन व्हाट इज द पोटेंशियल्स. सो देयर इज स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स अप्लाई किया एंड विद चार्ज द मूव. फोर्स का वैल्यू क्या होता है बेटे? Q नॉट इंटू ई, Q इंटू ई, ठीक है. सो दिस इज स्मॉल वर्क डन. टोटल वर्क डन के लिए हम इसको फिर से क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेट. And if we integrate this one equation from point A to B, ठीक है, work done from A to B, small work done, then from A to B the small work done हम value को substitute करेंगे and we will find the values of integrations of E dot dl. And as you know that Q naught को हम इसके नीचे divide कर देंगे and we know that what is the electrostatic potentials, potential difference, work done from A to B and potential from B to A, क्योंकि potential B पे high होगा and A पे less होगा. So that is why. So this is the one of the expressions for electrostatic potential difference. And if you want to move the charge from infinity to point B, then in such a case that its expressions can be written like this. Okay. So let's try to solve one numerical, that is 5 joule work is done in moving a positive charge of 5 coulomb between 2 points. ठीक है, अब क्या करना है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? डिफरेंस निकालना है बेटे. तो डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन कितना है? 5 जूल. कितने चार्ज को मूव करवाया? 0.5. तो 5 अपॉन 0.5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट. 10 वोल्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो ऐसे बहुत से सिंपल क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है. एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर थ्रू द ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दैट इज गिवन इन द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है. एंड क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स. ओके, सो next topic is expression for electric potential difference. You know that electric potential difference is a scalar quantity also. Okay, and what is the definition of it? Is the amount of work done per unit test charge to moving it from one point to another against the electrostatic force is called as electrostatic potential difference. So next we have its SI unit mathematical expression same as we have done earlier, ठीक है. तो उसमें भी सेम चार्ज को मूव करवाएंगे फ्रॉम
A to B. The potential is at A is VA, potential at B is VB, and we know that potential at B is more as compared to potential at A. So potential VB minus VA. Okay, VB minus VA. This is the same expression that we have done earlier case, that is force experience on unit charges F is equal to minus QE. स्मॉल वर्क डन के लिए फिर से आएगा. अब हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं. देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस चार्ज, बट अगेन we also applying a force on charge test charge Q naught along these directions, and this positive charge applying force along in opposite directions. So the way the charge move in opposite direction, so theta angle will be 180 degree. So cos 180 means that minus 1 आ जाएगा. Then we have expressions of electric field का क्या होता है बेटे, that is 1 और 4 पाई epsilon naught into charge upon डिस्टेंस क्या है. इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्यू नोट आ गया, क्यू नोट इसके नीचे डिवाइड कर दो तो वैल्यू आ जाएगा. स्मॉल वर्क डन निकाल लो, फिर टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट, एंड आफ्टर इंटीग्रेटिंग वैल्यूज वी विल गेट द एक्सप्रेशंस. इंटीग्रेट कर देंगे आस्के का आर माइनस को करने के बाद इन द लास्ट वी गेट दिस वन वैल्यूज. द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट इज, ऐसा यूनिट इज वोल्ट, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर कूलम. याद रखिए, इसका भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटे. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस में क्या आएगा बेटे, वी मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए. तो वर्क डन भी हुआ फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन टेस्ट चार्जेस. तो फिर से वर्क डन के लिए सेम एक्सप्रेशन है. सो दीज लेंथी एंड expressions need not, you can do its maximum practice, but these question will come up from objective based questions, and for that purpose you have to remember these results. ठीक है. For point charges the value of potential is Q upon R. For potential difference the values of potential is VB minus VA is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q ब्रैकेट में 1 over RB minus 1 over RA. So different टॉपिक के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशंस आएंगे. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन एक्सप्रेशन. अगेंस्ट द पोटेंशियल एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट विच इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. सो लेट्स स्टार्ट वन मोर एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल पार्ट. ओके, so calculate the electric potential at the surface of gold nucleus given the radius of nucleus is this. Okay, and atomic number of gold is 79. Atomic number is given, it means that number, what is the value of charge, charge निकालना है. चार्ज क्या आएगा, atomic number into E. तो atomic number multiply by charge of 1 electron को हम कर देंगे, and what is the radius, distance given, distance भी आ जाएगा. The value of electrostatic potential is 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R. R का वैल्यू पुट कर देंगे, that is the distance, and 1 over 4 pi epsilon naught का वैल्यू कितना होता है बेटे, 9 into 10 to power 9. So after calculation we will get the values of electric potentials, which is 1.724 into 10 to power 7 volt. Next is electric potential due to a system of charge. From system of charge we have a charge here, a Q1, and at P we have charge that is known as test charge Q naught. What is the electrostatic potential at point P due to Q1 and due to Q2, Q3 and n numbers of charge? So same expression, the potential at due to charge Q1 is this, due to Q2, Q3, Q4 up to n, सबका हम sum of potentials कर देंगे. ठीक है. So this is equal to superpositions of electric potentials. So that's why at the end we have this one, its expressions. So next topic we have a, yes, this is important topic, that is a electric field. Next topic is electric field as a gradient of potential. Yes, it means that potential decrease with respect to distance. Potential decrease with respect to distance, we call it is potential gradients. And for this we have to find that
the values of potential at point P and at point Q. So as we move from point P to point Q, okay, then what will happen? Then its potential increase. And if we move from Q to P, then potential will decrease, because moving from Q to P, the distance will increase. If distance will increase, the electrostatic potential will decrease. So same expression can be done here. Electrostatic potential value is what is the potential? Yes. So at point P, the electrostatic potential is V. ठीक है, पोटेंशियल कितना होगा बेटे, P पे V होगा. एंड इफ वी मूव फ्रॉम P टू Q, देन पोटेंशियल विल इंक्रीज. कितना इंक्रीज होगा? जितना स्मॉल डिस्टेंस होगा, स्मॉल डिस्टेंस के लिए dV आएगा. सो V प्लस dV इज द फाइनल पोटेंशियल एट पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल एट P. और P पे पोटेंशियल कितना था, V इज इक्वल टू कितना, वर्क डन ओवर टेस्ट चार्ज. तो वर्क डन कितना हुआ है, स्मॉल वर्क डन. ठीक है, स्मॉल वर्क डन है तो V से V कैंसिल हो गया, dV. तो देर इज स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल फॉर स्मॉल डिस्टेंस dl, मीन्स dV इज इक्वल टू dw अपॉन Q नोट. सो फोर्स एक्सपीरियंस है, वर्क डन होगा, थीटा आ गया सेम दैट वी हैव डन एज रेडी इन अर्लियर केसेस. सो स्मॉल वर्क डन है, चार्ज इसके नीचे चला जाएगा, वैल्यू इसका बन गया, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू dV. सो dV इज इक्वल टू EdR. तो वैल्यू इसका क्या बन जाएगा बेटे, dAr इसके नीचे चलेगा. सो दिस वन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शंस ऑफ फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स. तो जिस साइड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उसी तरफ होगी. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI unit is volt per meter. Okay, so let's start one more numericals related with this. Two parallel plates are 5 centimeter apart and potential difference 60 volt is set up across them. अब देखिए डिस्टेंस कितना होगा, दो पैरेलल प्लेट्स है, दोनों में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 5 सेंटीमीटर एंड पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस और पोटेंशियल गिवन है. क्या व्हाट यू हैव टू फाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज वेरी सिंपल. डिस्टेंस भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, E इज इक्वल टू VD. E इज इक्वल टू VD एंड डिस्टेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे इन मीटर में. ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव सॉल्व एंड देन आफ्टर वी हैव रिजल्ट. डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे बेटे, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr विच इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन 0.05 माइनस 1200 वोल्ट पर मीटर. नेक्स्ट हमारे पास है बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेस. दिस इज द सरफेस एट ऑल द पॉइंट इट्स पोटेंशियल इज सेम. ठीक है, एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो हमने ऑलरेडी ये टॉपिक स्टडी किया था कि इफ़ वी हैव अ चार्जेस एट द सेंटर, तो उसके फर्स्ट जो रिंग होगा तो उस रिंग का जो रेडियस होगा वो सेम होगा एट ऑल इट्स पॉइंट. तो एट ऑल दीज पॉइंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी द सेम पोटेंशियल. तो इस सरफेस को हम क्या बोल देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस. So similarly, if you increase the radius, there is different ring बन जाएगा. So on that one ring, the electrostatic potential is same, and that is known as equipotential surface. Next one is the properties of equipotential surface. There is work done is zero. No work is done in moving a test charge over equipotential surface because there is, because electric field and the displacement both making angle 90 degree. ठीक है, you are moving a charge from A to B, but the field line from the equipotential surface is normally to the surface, which will making angle 90 degree. And as we know that it's dot product, work done dot product होगा, तो dot में cos 90 का वैल्यू 0 आएगा, so work done is 0. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, तो सरफेस के हमेशा 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज आउट होंगी, बाहर की तरफ आएंगी. सो अगेन द फील्ड लाइन विल डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, सो इफ डिस्टेंस इंक्रीज फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज. इफ
Electric field will increase if distance will decrease. Equipotential surface tell the directions of electric field. So this is also gives the directions of electrostatic field. Then the next topic we have draw the equipotential surface. Equipotential surface हमने draw करनी है बेटे. उसके लिए हमने क्या करना है? To drawing the equipotential surface, we have a uniform electric field. Uniform electric field. See this one part. This field line is moving normally along this one equipotential surface. Now you will notice that this field line is at the same distance. Okay, point V1 and V2 का distance क्या है? Same. If distance same है and strength of field है, it means that जितना potential V1 और V2 में होगा वो सारा का सारा सब point पे same ही potential होगा. Because V1 and V2 is at fixed distance. अगर हम पोटेंशियल इस पॉइंट पे नोट करें, चाहे इस पे करेंगे चाहे इस पे करेंगे, सबका पोटेंशियल सेम आएगा. क्यों? बिकॉज पोटेंशियल एट V1 एंड V2 का जो डिस्टेंस है वो सेम है. अगर डिस्टेंस सेम होगा देन पोटेंशियल जितना ए पे होगा ना इस चार्जेस का सेम पोटेंशियल होगा. एंड दिस एंटायर सरफेस ऑफ प्लेट 1 is recommended as equipotential surface. So this is first case. The second diagram is of this one ring. And the third is of two same charges and opposite charge. This one is same charges. This is for opposite charge. Force of attraction, force of repulsion, and दोनों charges के in between जो centers में इसके parallels में हम जो line लगाएंगे, ठीक है, that line will show the equipotential surface. Next one is the topics. That is last topic. That is also very important topic. That is called as last topic is called as potential energy of electric dipole when placed in uniform electric field. So in this case again we have a dipole. Okay, we have a dipole and dipoles में क्या move करेंगे बेटे? एक positive charge एक negative charges है, ठीक है. Whenever these are placed in electric field, electric will apply the force on positive charge along the same direction, but on negative charge it will apply force in opposite directions. So Q no जो minus Q charge move backwards, so positive Q move forward. तो ये ऐसे था, तो ये move force लगने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है. Earlier it is like this one, then after it is move. Why it is move? So force into perpendicular distance होगा, so it is work done. टॉर्क का वैल्यू होता है बेटे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा. वर्क डन क्या होगा? टॉर्क इनटू डी थीटा. सो पी टॉर्क का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे. दिस इज स्मॉल वर्क डन. टोटल के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर चले जाएंगे. साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा आ जाएगा. वैल्यू को चेंज कर देंगे, ठीक है. तो थीटा 2 का वैल्यू आएगा माइनस में और जो थीटा 1 पुट करेंगे माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा. सो प्लस वाला पार्ट हमने आगे ले लिया. सो दिस वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल रिलेटेड विद दिस. That is electric dipole of length 2 cm placed with its axis making angle of 30 degree to the uniform electric field. Next you have to find the values of a मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है. आपको पता है डाइपोल मूवमेंट होता है. डाइपोल मूवमेंट हम निकाल लेंगे पी का वैल्यू निकालने के बाद चार्ज का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इंटू 2a. तो डाइपोल हमारे पास होगा इंटू 2a. डिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है. सो सिमिलर दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली डन. सो बेटे ये चैप्टर्स मैंने रिवाइज करवा दिया. अब आपने इसमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है. आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएंगे, ठीक है. तो इस चैप्टर के एंड में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए. बोथ द चैप्टर्स ऑफ गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर्स. थैंक यू.